अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और घंटी के बटन को दबा दें और मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप कानून से मुतल्लिक आगाह हों। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज हम सेक्शन 131A पढ़ेंगे, पावर्स टू यूज़ मिलिट्री फोर्स फॉर पब्लिक सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस of law and order. If the provincial government is satisfied that for the public security, protection of life and property, public peace, and the maintenance of law and order, it is necessary to secure this assistance of the armed forces. The provincial government may require assistance of the armed forces. The provincial government may require, with the prior approval of the federal government or the federal government on the request of the provincial government, direct any officer of the armed forces to render such assistance with the help of the armed forces under the command that such assistance shall include the exercise of powers specified in section 41, 46 to 49, 53, 54, 55 and C 58, 63, 67, 100, 100, 02, 100, 100, 03, 100, 56, provided that such powers shall not include the powers of a magistrate. Number 2, every such officer shall obey such requisition or direction as the case may be, and in doing so may use such force as the circumstances may require. Number 3, it in rendering assistance relating to exercise of powers specified in subsection 1, every officer shall, as far as may be, follow the restrictions and conditions laid down in the code. Section 132, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह आप लोग का हामी और नासिर हो। मेरी आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी और लाइक के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर